ओके ठीक अच्छे। नमस्कार ओडिशा ओडिया शिखा आपको स्वागत B.Ed Entrance 2026 को आपण समस्त को स्वागत जो प्रीवियस क्वेश्चन 2023 डिस्कशन क्लासेस को आपण समस्त को स्वागत। ठीक अच्छे ओके एबे ऑडियो समस्त क्लियर आसी एबे बैकग्राउंड नॉइज आसु नथिबा हो ठीक अच्छे। अगेन समस्त को स्वागत नमस्कार प्रणाम जय जगन्नाथ। प्रणाम प्रणाम ठीक है अपेक्षा करिबा ना स्टार्ट कर दबा। ओके मैसेज कर दी छी एक्सपेक्ट कर अन्य माने जॉइन हे जानतु जदि न जॉइन कले तार क्या क्लास कैंसिल कर दबा परवर्ती समय रे काली सखाळे क्लास करबा। ठीक है अपेक्षा करि जिबा 4 मिनिट और कोडे ही गला पर ओके ठीक अच्छे आसीगला समस्ते ना अपेक्षा करी अन्य माने आसी जानतु। नमस्कार नमस्कार इटिंग खाओ खाओ खाई दियो खाଇବା ଭିତରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିବା। अच्छा ठीक अच्छे हाँ आम कि टीचिंग एप्टीट्यूड विषय डिस्कसन करुवा किसी थ्योरीज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड हम बुक कड़ा गला ओके बुक पड़ी गला अच्छा ओके कमिशन कमिटीज गुड़ाक पड़े गला हाँ आसीगला ना ना एटा नुहे एटा भी नुहे एटू आरंभ ओके सब कमिटीज ऊपर शॉर्टकट चार्टर एक्ट 1883 रे हितला प्री इंडिपेंडेंस 1835 मैकॉली वुड्स टेस्ट 1854 तब कौन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाए कोटि कोटि 3टा यूनिवर्सिटी प्रपोज करा जायतला कलकत्ता बॉम्बे मद्रास हंटर कमिशन 1882 फर्स्ट इंडियन कमिशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमिशन भी कहा जाए रेलिक बा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 1904 शॉर्टकट रे किछि जानता चार्टलर यूनिवर्सिटी कमिशन 1917 टू 1919 इंटरमीडिएट एजुकेशन भी कहा जाए चार्टलर यूनिवर्सिटी कमिशन। देन हार्टक कौन 1929 तक कौन कहे वेस्टेज आउ स्टैग्नेशन ऊपर भी
କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡ୍ରପିଂ ରେଟ୍ ବି କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ, ଡ୍ରପ୍ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାପ୍ରୁ କମିଟି 1934 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହାର। ଆବଟୁଡ୍ ରିପୋର୍ଟ 1937, ୱାର୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 1937, ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ 1944, କମିନ୍ ସେଠି କହିଲା ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏରା, ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ କମିଶନ୍ ବାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ 1940 to 49, କ'ଣ 180 days working days, Mudaliar Commission বা Secondary Education Commission 1952 to 53, Mudaliar Commission বা Secondary Education Commission 1952 to 1953। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସ୍। ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ। 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ଆଜି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଆଉ ହେଲାନି, ମିକ୍ସ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ହେଲାନି। କାଲିଠାରୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖ। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଆଉ ପେଡାଗୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦ ୱାର୍ଡ ସିମିଲାର ଇନ୍ ଦି ମିନିଂ ଫ୍ଲୋରିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 2023ର 2023ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ୱାର୍ଡ ସିମିଲାର ଇନ୍ ଦି ମିନିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ପେରିସ୍ ପ୍ରସ୍ପର ୱିଥ୍ ଆକ୍ୱାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ଆମେ ଅଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ଲୋରିସ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ସମୃଦ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ପର, ହଁ ନାଇଁ? ପ୍ରସ୍ପର, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଓକେ। ଫ୍ଲୋରିସ୍ means to grow or develop in a healthy or virtuous, vigorous way, which is synonymous with prosper. The word opposite in the meaning to industrious is dash, courageous, stupid, lazy, clever. जल्दी से आंसर दे दे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 रे हम আছে। ठीक ଅଛି, ହଉ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲ। ସି, lazy is the perfect answer. So industrious means hard working or making lazy its exact antonym ବା ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଲେଜିରେ କିଏ? ଲେଜି କିଏ? ଲେଜି କିଏ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? border conflict is always a dash issues between two neighboring nations. Pick out the most suitable word. Debating, debated, debatable. ଆଉ କିଏ ଲେଜି? ସୁଇଟି ଲେଜି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନା କ'ଣ? Debatable is the perfect answer ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲା teacher dash all my doubts in English grammar, clarified, clarify, clarification, clarifying. ତମେ ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଓନ୍ଲି ଲେଜି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି ଲେଜି ଟିକେ ଆଉ କିଏ ତାହେଲେ ଲେଜି ଅଛି?
clarified is the perfect answer. बहुत बढ़िया पिले माने बहुत बढ़िया. The sentence requires a main verb in the past sentence, sorry, past tense. Clarified ना को. Which of the following word is correctly spelled? Absence, acceptable, knowledge, accommodate. Perfect. Accommodate. Accommodate is spelled correctly. The correct spelling for others. Absence. ABS, ना को. ABSENC ठीक ଅଛି ଅଲଗା ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି. which of the following sentence is correctly punctuated କୋଉଟା punctuated ହେଇଛି correctly ବା ମାର୍କ ସବୁ क्वेश्चन ମାର୍କ ହଉ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ମାର୍କ ହଉ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି. क्वेश्चन नंबर 11 में समस्त आंसर दे दियो. The prince wonders what a piece of work is man. ना को B. महुमच्छी B महुमच्छी ये गुड असला. अच्छा B पर B डबल E ना. Types which containing an exclamatory sentence must be enclosed in quotation marks. Alas, how quickly things go wrong. The underlined word is does. Noun, reversal, interjection, conjunction. पवन होउची ए लेवल पवन भगवान हाँ A4 साइज पेपर मु प्रिपेयर करूଥିଲି नोट देखो कौन अवस्था है उड़ी कर मुड़ी गला. ठीक अच्छे हो परफेक्ट इंटरजेक्शन इज द परफेक्ट आंसर. परदिन समझ okay चकला had I the wings of a dove I dash across the seas. The correct form of the verb is what? Perfect. That's it. Would fly is the perfect. This is a conditional sentence expressing an imaginary situation which requires would plus verb in the main clause. Who has been teaching you English? The sentence can be changed into passive voice as what? By whom have you been taught English? By whom had you been taught English? By whom is English taught to you? By whom are you being taught English? Speed up करिबा. एटा त मन पूरा समस्त प्रीवियस 2023 रे ग्रेस मिलतला समस्त एटा पे but correct answer A. A is the perfect answer. By whom have you been taught English? किंतु क्वेश्चन टा ही भूलतला ओरिजिनली. ठीक अछि. Teacher said to his pupils, "Are you ready for the test?" The sentence can be changed into indirect speech as what?
बहुत बढ़िया, बी इज द परफेक्ट आंसर ना कौन. The teacher asked his pupils if they were ready for the test. An interrogative sentence starting with an auxiliary verb uses if or whether as a linker in indirect speech ना कौन. निश्चित निश्चित सिस्टम फाड़ देंगे. बहुत बढ़िया. क्यों वर्ण को अंतस्थ व मध्यवर्ती वर्ण कहुए. अंत्यस्थ वर्ण. भल से पढ़ी के आंसर दियो. अंत्यस्थ च र ळ व. परफेक्ट. ओके. ओके. जयद्रथ शब्दर संधि रूपटी एटा टिके कौन हम मिस्टेक हो जाइए. क्वेश्चन पढ़ी ना जल्दी से आंसर दे दियो. जयत युक्त रथ जयत रथ. हाँ निम्न शब्दर शब्द रूपटी क्योंटी मुहूर्त कूटा करेक्टली सठिक शब्द. देखु जेटा कहार भूल हो देखु. अच्छा मुहूर्त भल से चेक कर कोटा ठीक पिले माने भल से चेक कर वेरीफाई कर कौन सब भूल वाला आंसर देलन. कौन बा D is the correct answer. मुहूर्त. The correct grammatical spelling ओडिया is मुहूर्त short u ओ मु जुक्त उ और दुर्बल का त. भूल हेले चॉकलेट दिया हबो नहीं नहीं गाली दिया हबो गाली. तमे जदि पचारिबो तेबे मु कहिबी किंतु मु जहा कहिबी ता द्वारा तुम किछि लाभ हेबो नहीं. यह क्यों प्रकार वाक्य. मिश्र ना जटिल ना यौगिक. अच्छा एक रु अधिक
कौन कही एकाधिक खंड वाक्य रही यह जटिल वाक्य भाव में आम ग्रहण करवा कौन पहला क्रिया पूर्व साधारणतः केतेबेले लगाई प्रश्न कले केतेबेले सेतेबेले जेतेबेले उत्तर क्यों कारक मिलता है क्वेश्चन नंबर 23 रे आज काली राति 9:30 तुम मान जनार्दन भाई सहित कथा जेहेतु समय रहुनी लाइब्रेरी आसु आसु राति 9:30 हो जाऊँगी खाद्य सारी राति 9:30 तुम मानक ग्रामर उपर नॉर्मली गोटे गोटे थ्योरी गोटे डेफिनेशन एग्जांपल दे दी बुझेदेवे ये टाइप टेक्स्ट न पारे थ्योरी जस्ट कहीदेवे से ठीक अच्छे पे हाँ 23 आम अच्छे स्पीड अप करवा कालकरण कारक क्रिया साधित होबार समय बा काल को कालाधिकरण बा कालाकारण कारक कह क्योंटी व्यधुकरण बा कौन बहुब्री समास उदाहरण व्याधिकरण जोटा है व्यधुकरण अच्छा भगवान कौन कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे टाइपिंग रे गोटे प्रॉब्लम गोटे गोटे वर्ड ओडिया वर्ड सपोर्ट हो कौटी गोटे गोटे बस देखी सपोर्ट कर कहला प्लीज द प्रॉपर आंसर चक्रपाणी चक्रपाणी रे जहार ना कौन निम्न वाक्य रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति सूचक हिमालय गंगा नदीर उत्पत्ति होउछि हिमालय गंगा नदीर उत्पत्त होइछि रु रु लगी रु थिले कौन पंचमी मान नहीं कौन पीताम्बर व्हाई नॉट पीताम्बर हबनी पीताम्बर चक्रपाणी जार पीताम्बर पीताम्बर रे जार ना कौन माने पंचमी परफेक्ट बहुत बढ़िया पहले माने by which treaty British acquired the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha? Treaty Salabai, Treaty Amritsar, Allahabad, Purandar. Question number 26. अरे कौन है सब स्लो कौन माने मैगी फैगी खाई देछ समस्त स्लो हो जाइछ ना डेट डेट कौन ता कहती लाइफ बॉय फाइव कौन खाई देछ बंटी साबुन स्लो हाउ सी इज द परफेक्ट आंसर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ना कौन हाउ which was the first princely state to be annexed to the British Empire under doctrine of lapse पखाड़ माड़ाटा है राति रे पखाड़ परफेक्ट 17 was the first princely state annexed by Lord Dalhousie under doctrine of lapse short choice. Why did Swami Vivekananda deliver his famous speech at the Parliament of Religions? New York, Chicago, California, Washington. Question what is Ramaj? की फास्ट आंसर दोची देखिए की फास्ट आंसर दोची फास्ट आंसर पहरा
ନ୍ୟୁୟର୍କର ଚିକାଗୋ ନା କ'ଣ? Swami Vivekananda delivered his historic address at the Parliament of Religions, Chicago on September 11, 1833. Who is credited with passing of Hindu Widows Remarriage Act 1857? सॉरी 7 उच्चारण कर दीजिए सॉरी क्या चाहूँगी ओके राजा राममोहन राय दयानंद सरस्वती केशव चंद्र सेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द परफेक्ट आंसर बहुत बढ़िया पिला बहुत बढ़िया पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैंपेन tirelessly leading to the enactment of Hindu Widows Remarriage Act in July 1856. Who did establish Satya Sodhaka Samaj? E.V. Ramaswamy, Naika, Jyoti Govindara Phule, Sri Narayan Guru, B.R. Ambedkar. से भी जो है वो परफेक्ट तो ठीक पढ़ा है ज्योति गोविंद फुले गोविंद फुले परफेक्ट ज्योतिराव फुले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र in Maharashtra. Okay. 1873 to promote social rights for marginalized groups. Where did Indian National Congress by INC adopt the resolution on non-cooperation movement at its annual session? Bombay, Madras, Calcutta, Nagpur. Question number 3 Nagpur, perfect. Poor. The non-cooperative resolution was officially ratified at the regular annual session of INC in Nagpur in December 1920. In which Gandhian movement did Aruna Asaf Ali play a very prominent role? Non-cooperation, civil disobedience, Indian civil disobedience, quit India. Question number 33. Quit India, Bharat Chhod. Aruna Asaf Ali, also known as for hosting the Indian National Congress flag at Gwalior Tank Maidan during the Quit India movement. 1942. Which emperor of France said, "After me, the deluge"? Question 33, Raj. Under, na kung? बहुत बढ़िया. X. This is the perfect answer. Après Moe Le Deliu is historically attributed to King Louis of XV of France. Which country did withdraw from First World War then when the war was still going on? Japan, Australia, Russia, Turkey. Question 34 so much. कुआडे गला समस्त आंसर कुआडे गला आंसर कहीं आसुनी Russia is the perfect answer. Russia withdrew from World War I, 1917, following the Bolshevik Revolution, signing the Treaty of Brest-Litovsk with the Germany. The attack on which country by Germany led to the starting of Second World War?
D. Poland is the perfect answer. Who from the below was not a member of the cabinet mission constituted for the purpose of formation of constituent assembly? Lord Wavell, Sir Fethick Lawrence, Sir Stafford Cripps, A.V. Alexander. Question of 36 rank. Perfect, Lord Wavell. Which one is the correct expression of the structure recommended by the preamble? Sovereign secular socialist democratic republic, sovereign socialist democratic secular republic, sovereign secular democratic socialist republic. Okay. Perfect. D. Sovereign socialist secular democratic republic. बहुत बड़े. The correct constitutional sequence in the preamble watch constitution draw correct preamble जो sequence अच्छी constitution heart and soul कहाँ को heart and soul of constitution कहाँ को कि भाई वो 7th schedule of the constitution deals with what? Provision with regard to north east, distribution of power between union states, language of union, provision of by oath by prime minister. आज पेपर क्वेश्चन पढ़ुला आम 7th schedule ऊपर हाँ नहीं power between union and states. हाँ तो 7th schedule delineates the distribution of the legislative powers between the union and state government through 3 lists. State union concurrent. Which one is not a silent feature of the Constitution of India? Parliamentary government, secular state, rigid constitution, integrated judicial system. Question 39. बहुत बढ़िया rigid constitution ना कौन so कहला who presides over joint session of parliament के president of India, vice president, speaker of Lok Sabha, the house elects chairman. Question of 40 में बहुत बढ़िया Speaker of Lok Sabha ना कौन perfect. The Speaker of Lok Sabha presides over in a joint sitting of Parliament under Article 118 ना कौन हाँ एगुड़ा आम जो पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करते सब आम सारी देते ना आम नॉर्मल क्वेश्चन आम सारी देते. Which state below has no second chamber legislative council जोटा करो बा legislative council नहीं मध्य प्रदेश ना परफेक्ट आंसर बहुत बिलो ये सब हमें नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी सॉरी हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं एगुड़ा सब हमर सरी जाइतला. पॉलिटिकल साइंस सिस्टम एगुड़ा सब नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी एगुड़ा सब मैक्सिमम जिनस हमर कवर हो जाइए हिस्ट्री टिके जो गुड़ा को कैनाटिक वार विषय ये फ्रांस लुइस इस किंग ऊपर टिके हमें अधिक डिस्कस करने. क्वेश्चन 42 रे हमें अच्छे ठीक अच्छे हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, collegium system of apex court.
ए प्रेसिडेंट ठीक अच्छे से कह हाई कोर्ट रो अपॉइंट किए करे जो ओथ नेला बेले रहिबे किए गवर्नर पीडीएफ दिया है पीडीएफ तुमको दिया है सब पीडीएफ दिया है पूरा 510 गोटे पीडीएफ तुमको दिया है पढ़ा है तुम पढ़ ना तुम दिखाई तुम पढ़ ठक सब व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 143 it deals with the special power of apex court provision with regard to judicial review president's power to seek opinion of apex court on matters of importance power of transfer of cases from the one court to another question of 43 damage perfect president's power to seek opinion of the apex court on matters of importance Kodra 143 grants the president of the India power to consult to seek the advisory opinion of the Supreme Court 2025 रे एटा घटितला ना नहीं कौन है कि सॉरी कहलो किछ असुविधा नहीं किछ सॉरी के आवश्यक नहीं कौन करछो कि सॉरी कहछो ठीक है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज स्पेल्ड आउट इन जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद गोलकनाथ केशवानंद भारती मीनर वमेन्स क्वेश्चन 44 में बहुत बढ़िया सी केशवानंद भारती तो परफेक्ट से कहछि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज स्पेल्ड आउट इन द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती Supreme Court introduced the basic structure doctrine in the historic Kesavananda Bharati versus State of Kerala case in 1973. By which amendment of the Constitution the right to property removed from the list of fundamental rights. को amendment हिसाब से एबे 300 केते रछि क्यों आर्टिकल ले थिला क्यों आर्टिकल एबे अछि क्यों अमेंडमेंट हिसाब रे हटाई छै ओके 44 परफेक्ट आंसर ए मते को आर्टिकल ले थिला तो क्यों अमेंडमेंट हिसाब रे हटा दे छै एंड माने थिला बहुत बढ़िया 300 केते रे बे टाइक रखा है छी 300 ए ना को 44th Amendment Act of 1978 removed the right to property from the list of fundamental rights making it a legal right instead 300 ए ओके परफेक्ट से कहला What is the longitude of Moscow, which is located 3 hours ahead of Greenwich? 45 degree west, 45 degree east, 30 degree east, 30 degree east. 15 degree is equal to kete? 15 degree is equal to 1 hour. कहीं ना गोटे डिग्री इक्वल टू 4 मिनिट 15 4 60 माने 60 मिनिट 3 घंटा हेले केते डिग्री 15 3 45 45 ईस्ट ना वेस्ट है मते को आहेड कहि छी माने ईस्ट ना को परफेक्ट व्हिच माउंटेन पास डज जॉइन सिक्किम विथ चाइना दीपू पास नाथुला पास जीएलएफ ला पास पांगसौ पास कुछ 47 है नाथुला इज द परफेक्ट आंसर बहुत बढ़िया the part of the Himalayas lying between the Satluj and the
Kali rivers is known as what? कौन आंसर पहले? C is the perfect answer. The Kumar Himalayas. ना कौन? Geographical, the regional division of Himalayas between the Sutlej and Kali river is called Kuma Himalayas. है ना नहीं? Which state has the maximum area under deciduous forest cover? It is just I mean recent geography last natural resources geography class में discuss ହେଇଥିଲା. Question 49 में আছে. मध्य प्रदेश देखो बहुत बड़ा. Madhya Pradesh has the largest area under forested cover in India, dominated by the tropical deciduous forest. Just recent last ଆମର जो क्लास थिला रिसोर्सेस ऊपर जियोग्राफिकल रिसोर्स ऊपर सेइतरे एटा डिस्कस हेतला. Why does the climate of Amritsar and Simla vary even if both are located almost on the same latitude? Difference in the altitude, distance from the sea, snowfall in Simla, pollution in Amritsar. बहुत बढ़िया. डिफरेंस इन द अल्टीट्यूड. ठीक अच्छे. आज ये डिस्कस करवा ना कौन कौन बाकी जी की काली डिस्कस करदे. ठीक अच्छे बोले कहीं ना जेहेतु तुम मानक भी थका लगुथ अलरेडी राति बहुत हो सारा 11टा बाजी सारा से चाहूनी अधिक समय नापी 3टा क्लास तुम मैंने अटेंड कर. ठीक अच्छे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ तुम मान डिस्कसन चालू चल. ठीक अच्छे धन्यवाद. आशा कर समस्ते आज टॉपिक बुझी पार्थ काली एगेन आ गोटे ये पार्ट रे 50 क्वेश्चन बाकी जो रही अवशिष्ट डिस्कस करदे. ठीक अच्छे काली भाई 11:30 रे काली 11:30 रे कौन 11:30 क्लास 10टा बेले ही होची क्लास दिन 10टा राति 9टा सॉरी राति 9:30 रे दिन 10टा. दिन 10टा गोटे 3टा बेले गोटे अपराह्न 3टा बेले होची. हाँ काली सॉरी थिला 11:30. अच्छा ठीक अच्छे हाँ सारे सेसन. धन्यवाद. जय जगन्नाथ. तुम मान डिस्कसन चालू मुझे चलिए. धन्यवाद पे मैंने. गुड नाइट शुभ रात्रि समस्त बहुत बहुत धन्यवाद. एगेन बंदे उत्कल जननी सर्विसेस.